You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. हेलो, आई एम बैक। और बस अपना ये डाउनलोडिंग चल रहा है बहुत जोरों जोरों से, और फिर अपन वापस खेलने लग जाएगा गेंशिन। और यहाँ भी कर लेते हैं अपना। ओके ये कब चालू होगा? ओ भाई लोग किधर रह गए सब लोग? वेरीफाई फाइल ये कर ले भाई, जो करना है कर ले। प्रॉब्लम एकदम नया नया बैनर आ गया है। तो भाई कितनी ही धूप आ रही है, एकदम चमचमाती हुई, आंखें चल गया भाई। ओ मैं इंतजार कर रहा हूँ कब आएगा। आवाज तो आ रहा है ना मेरे बाबू। गेंशिन 99.99% मार दिए गए हैं। फाइल ओके हो गया भाई स्टार्ट। और इसी के साथ हमारा ब्रश कहाँ गया? साफ सफाई वाला साफ करना है। स्टार्ट हो जा भाई, सही टाइम दे रहा है। थंबनेल कैसा लगा ये बताओ? थंबनेल कैसा लगा? बड़ी मेहनत से बनाया है, फिर 2-4 मिनट में, बड़ी मेहनत से बनाया 2-4 मिनट में।
ये उठाया वो उठाया, पिछले वाले में पेस्ट किया और हो गया। अब मेरा ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये भी देखना है। इन लैब्स का अलर्ट डाला नहीं, तभी तो नहीं है शायद। हो सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला है। ये अलर्ट क्लाउड। ओ भाई हम डेजर्ट में आ गए। यहाँ क्या करने आया था, मैं आखिरी बार आया था। पूरा गेम दोबारा से किया। ओ भाई क्वेस्ट आ गया। Let the magic begin! और ये फ्री मिलेगी इनवाइट। ये फ्री मिल रही है खोलते ही। भाई ये होता है, आते ही एक हमें लेने फ्री में मिली। Let the magic begin! इसके स्पेक्स पढ़ लेते हैं और इसे थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं, अपने लॉबी में ले लेते हैं और फारूजन को 5 मिनट के लिए थोड़ा। ओ भाई ये देखो, डेजर्ट में खड़ा हूं तो ऐसा लगेगा। ओके तो किधर है ये लड़की? You lead the way. ये थोड़ा लैग हो रहा है, ग्राफिक्स कम करता हूँ थोड़ा। ग्राफिक्स हाँ एकदम एकदम हाई पे चल रहा होगा ना ये सारा। चलो तो क्या है, ग्लोबल इल्यूमिनेशन पता नहीं। शैडो करो, रेंडर रेजोल्यूशन ठीक है, ये भी सही है। सिंक ऑफ करो, 16 और ऑफ चाहिए तो मोशन ब्लर ऑफ, रिफ्लेक्शन ठीक है, एंटी एलाइजिंग ऑफ, ओके फॉग ऑफ, एनवायरनमेंट डिटेल लो, ये लो कर लेते हैं, एफएक्ट लो। अभी लैग नहीं करेगा और अच्छा भी दिखेगा। Quit following me. लेट्स ओके। ओ ये कर रहे हैं, ये लड़की आ गई और इसको चाहिए रहेगा, क्या ही दे वेपन। इसके बेसिक पढ़ लेते हैं क्या है। बूम बॉक्स विवेक शॉट डैमेज ओके, तो ये डीपीएस है मेरे हिसाब से। रीजनरेट एचपी 25% और मैक्स एचपी ओके। एचपी पकड़ा देना इसे, इसको एचपी बिल्ड करना पड़ेगा और इसको एचपी के लिए क्या ही दे। अभी मेरे पास जो भी आर्टिफैक्ट पड़े हैं ना वो सब दे देता है। बड़ा है एक खाली, ये दे देते हैं चलो। एलिमेंटल मास्क ये वाले मेरे पास खाली पड़े ही रहते हैं। और यहाँ पे तो नहीं होता, यहाँ पे हाँ ये रहा ना एनिमी डैमेज, यहाँ पे क्रिट डैमेज का है ये। और एक और ऐसे वाला था और इसमें ईएम का होगा कोई, ईएम एचपी का है, ईएम का नहीं है तो क्रिट डैमेज था। हाँ अच्छा पीस था है, मतलब अच्छा पीस है भी है, अभी भी है। ये दे देते चलो, यहाँ पे शायद एचपी ही देना है और यहाँ पे एक और इसमें से कोई पीस मिल, चलो ये कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए चल जाएगा। अब ठीक है 2 पीस एनिमल रेडेंस 30 और ओके 186 ओके। 2 पीस बनाया, 2 पीस एनिमल 2 पीस एलिमेंट। वेपन में हमारे पास इसके ड्रेस से मैचिंग करता वेपन कौन सा होगा। हम तो कपड़े को हिसाब से ये मैच करेगा।
एल्बिडो का कर तो रहा है पर वो देखना ये तो और भी नहीं। ओके कौन सा दे ट्रैवलर का दे नहीं ठीक है ये दे देते शूट भी कर रहे Over here. Yeah. Yeah. एनिमी है क्या ओके इतना बड़ा है ना इसे अपग्रेड तो कर ले हैं वैसे तो ज्यादा अपग्रेड होगी नहीं और एक और विश मिल जाएगी हमें My perception has been heightened. एनिमो डैमेज और ये लड़की मिल गई अब ये मार के लाना पड़ेगा कहीं से देख लेंगे इसे 40 लेवल के ठीक है अभी फाइट कर लेंगे इससे। Step on up. ओके Behold! कितना ज्यादा डैमेज तो मार बैकग्राउंड में बैठ के बैठा है Off we go. तो इसने फिनिश कर दिया इसे। Over here. इसका स्किल तो ज्यादा कुछ खास नहीं है ओके ये तो यूज कर ही लेंगे और ये स्टोरी करना है व्यू अनलॉक कर लेते हैं पर यार बाद में ही करूँगा अभी नहीं कर पता चला क्वेस्ट में एक दखल अंदाज ओ भाई बहुत सारे एक साथ ही आ गए ये तो नहीं है ये और इन्हें ये भी बॉस है ये कौन से बॉस ओके नॉर्मल बॉस है ये भी एक नॉर्मल बॉस है ये भी मार अपना एबेस भी आ चुका है मैप करना है मुझसे पहले 7 स्टैचू अनलॉक करना और यहाँ से है रास्ता Let's explore. ओ भाई ये जा रही नहीं मस्त है फाइनली हम देखने वाले हैं ओ भाई साहब क्या ही झरना है भाई यहाँ तो फोटो खिंचवाना पड़ेगा और एक स्टैचू वहाँ पे है वहाँ तक जाना पड़ेगा ये पहाड़ों की ऊंचाइयों से मिल रहा है समुद्र का लेवल बराबर ही है भाई बढ़िया अच्छा जाएं कैसे वहाँ हाँ जाने के लिए क्या ओके यहाँ पे बात करना पड़ेगा भाई ये इतना इतना करना पड़ेगा ये तो एलिमेंट को तो गाइड करना There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. बट ये अलर्ट बॉक्स काम नहीं है नथिंग
There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. काम तो मैं और कर देगा ये तो काम करेगा Good old caravan rebut. Now let Paimon think. What were we up to the first time we came here? Oh, Paimon remembers. Nahita's consciousness had been trapped by the doctor. But so much time has already passed since then. And it seems Sumeru's changing for the better now that Nahita's in charge, right? Paimon just hopes this 500 peace will damage. last a long time. And then Nahita won't have any more new problems to deal with. Yeah, guess you're right. ये तो काम कर रहा है We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knows what will happen next? Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Let me see. Huh? Me? Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon got caught in some strange whirlpool and sucked out into sea. And even then, you fished Paimon out. Anyway, for Nahita's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. Gabi Island Road. Live at dogs. अभी करते हैं क्या आएगा ये Ah, look who it is. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. Oh, it's Dia! Since when are we just wandering around? We're usually taking care of some serious business. Even though it may have nothing to do with our journey. But never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two talking about anyway? Hey. Okay, okay. तो ये तो हो गया ये काम हो अभी चलते ये कौन देख रहा है Huh? You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. I guess you'd never stay for too long in one place. अपन माइनक्राफ्ट का सर्वर Bumping into you like this will become a rarity. I'm starting to feel sad just thinking about it. Hey, how about I gather a few mercs to escort you two? What do you say? Thanks, but no need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you... So, when are you leaving? Oh, wait a sec. ये कौन है ये कौन सी जासूसी लगा है भाई
I see. Guess you won't be needing a going away party or anything. It's sad enough to see you go like this. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving quietly. अरे भाई By sad the हो way, रही है। should we go say bye to Nahida? प्यार से sad हो रही है थोड़ा। ऐसा फील हो रहा है कि नहीं जा रहा यार, मेरा मन नहीं कर रहा है अब जाने का। कितना sad सा लग रहा है। Oh, good point. Then there's no need to bother her in the real world. Yes, Then, yes. I guess this is goodbye for now, Traveler in Paimon. Whether as a client or a friend, you're always welcome to come find me. क्या ही प्यार से Goodbye, बोल- dear. Bye. Bye-bye, Sumeru. देखो भाई जाते हुए कितनी मस्त लगी, आते हुए इतनी नहीं लगी इतनी जाते हुए। तो हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमें दोबारा से पटक दिया गया है। ओके, तो हमें क्या उड़ान भरनी है? The wind rises. तो हम ऊपर कैसे पहुंचेंगे ये तो बता नहीं भाई। मिस कर दी क्या? कितनी मिस है? मुझे वेपन तो चाहिए ही। ये कौन सा कैसा है? क्रिट डैमेज है कि ओके। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। करते क्या, एक कुछ कर देते। हाँ कुछ नहीं पता। चलो ये कर देते हैं, नए प्रीमो मिलेंगे तो 4 स्टार वेपन पीटी देखूंगा अभी। पैसे पहले पास ये तो मैंने कलेक्ट किया ही नहीं। 600 और मुझे करना था शॉप पे खरीद ही लेते हैं पाइमोन बाइक। हाँ है 3 में भी 3 ओके 20 सेंटर में 3 में देखते हैं कितने की पीटी है। अच्छा बैल अभी मिला था। लेना तो है भाई, दोनों में से एक वेपन लेना है और गारंटीड है। ओके वुल्फ रेस्टोन मिला था हमें 40 पहले, अभी 20 25 20 तो चाहिए ही। यहाँ पे कितने का है? यहाँ पे लास्ट रोजारिया मिली थी कुछ टाइम पहले। जाने दो, जाने वाले को बस एक सैक्रिफिशियल चाहे वो चाहे सैक्रिफिशियल वो हो, एक सैक्रिफिशियल वेपन चाहिए। वो स्वॉर्ड वो कुछ भी दे। अरे यार ये देते ही नहीं, हट बर्बाद हो गया सब। लगा था कि भाई लैंडेड बहुत अच्छा डैमेज दे दिया, सेकंड अकाउंट में लेने की सोच रहा हूँ, पर इतना बीस जमा होगा क्या? 10 तो पड़ा है मेरे पास सेकंड अकाउंट में, पर उतना काफी नहीं। और जोंगली मैं सोच रहा हूँ स्किप कर दूँ, मैं जोंगली जरूरी भी है। आ गए ये क्या? ये मिला। ओके डैंड्रो क्लू कह रहा हूँ, हाइड्रो क्लू दे ही देते। और ये यहाँ पे भी है भाई। नहीं 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 हाँ ओ भाई क्या बचेगा ये?
बच गया अरे भाई लाल बच गया क्या ही साउंड आ रहा है झरने गिरने का पहुंच गए फाइनली इतनी उड़ान भरने के After crossing all that sand and water, we finally made it! Oh, this must be Fontaine's port! Wow! Everything looks so advanced in Fontaine! Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines! Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do! What do you think? Good idea! Nahida gave us loads of useful information. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Yeah! The more we can learn, the better. So, what do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? Nahida said that she has a very unique personality, whatever that means. To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. मेरा गेम अपडेट नहीं था प्री और सुबह सब गड़बड़ हो गया सुबह करने वाला था If you ask me, it's a tragedy how things ended for him. Clearly, he was a pretty decent person. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. Why is he so sad? Why is he so sad? Excuse me. Can I help you too? I couldn't help but notice you standing here listening. Hi. We're travelers new to Fontaine, and we had something we wanted to ask, but you seem to be really busy talking about some kind of play, so we didn't want to interrupt. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case that was just heard a few days ago. नाटक समझ रहे थे पर ये अच्छी लग रही है ड्रेस ही सब की But the way you were talking about it and the words you used just now made it sound like some kind of story. Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. Okay. But, shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. And as for your worries about whether the cases are treated daily with due commission करना reverence, तो भूल ही गया we have the absolutely just रेजिन भी Chief बेस्ट Justice से movie किया night, as well as the सब बर्बाद Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the End में machine करूँगा and the अब तो Chief Justice, commission false तो charges end and में करना injustice है are a thing of the past now. Oratrice? Is it some kind of machine too? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Yeah, Hydro Archon किधर है? Oh, that's easy. Just go to the Opera House.
Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. Huh. I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she... Huh. Is the Hydro Archon super busy taking care of official stuff? Wait, didn't you say that she's always at the Opera House? No. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. That's right. After all, she is the Archon. Though she may take... Huh. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Neuvillette. Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. But who knows how long making an appointment will take? Hey! What are you looking over there for? Huh. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her. ये पानी में कौन है क्या? क्या हो गया है देख? अपना एयरपोर्ट का चैप्टर 4 का जो स्टार्ट होता है। अरे अभी ये दोनों की हाइट सेम है देखिए, और इसकी टेल भी है, इतनी अच्छी लगती है। अरे इसकी हाइट कम कैसी है? Hello there. Excuse me. Are you alright? Huh? I'm fine. Thanks. Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? No people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. And though I can still see that hill clearly in my memories, now it's been completely submerged. He would skip and jump, tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. But now, the water is gradually swallowing our memories. It won't be long before it swallows us. Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. काफी painful story लग रही है। I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and you are? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Oh, allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the traveler. We just arrived in Fontaine. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. Right. So that's how you think it is?
I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. पाइमन और ये देख जाते हैं भाई. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories? इसकी वजह से ही And that it चैटें won't बढ़ be long जाती. before it engulfs you too. Oh, that. But boat It's कर from रहे a थे. prophecy that's been circulating Xiao in जैसी Fontaine body for है, some time इसको- now. Well, I suppose prophecy isn't exactly या the right वैंटी word, जैसी समझ because लो. that implies a certain amount of uncertainty. Short height There's boy no है. doubt about what's happening in Fontaine now. मैं तो लड़की समझता था इसे. Where to begin? ये इसकी बहन है. Let's put that question on hold for a moment. We still have... Did all the introductions earlier not count? Hello, traveler. And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Please, don't right. take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in बेइज्जती Fontaine कर when रहा है making भाई new ये तो. friends. You should remember it. It might prove ये useful. बेइज्जती करने में लगा Oh. है. All right then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now. हाँ भाई By the पूरी way, बेइज्जती we कर were ही just दी. getting ready to go to the opera house to meet the नहीं Hydro आए. Archon. Would you be able to show us the way? We're getting ready. So you're going to see Lady Farina? Farina, No problem at all. In fact, I was planning to go to the opera house later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Please follow me. चलो फाइनली अभी हम जाने वाले हैं. पूरे फिर मैप की एक्सप्लोरेशन करेंगे. कहाँ क्या पड़ा है. बहुत सारी चीजें आ गई भाई एक साथ. जो वीडियो होगा उसको कट करके हम डाल देंगे. डबल डबल. ओ भाई ये क्या हो गया. You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. ओ भाई आ गई. आ गई भाई. यार ये तो चाहिए ही. मेरे पता है ये लेनी है मुझे अपने अकाउंट. ओके हाइड्रोआर को नहीं. ठीक है ओके. ओ भाई सी So, कैप्टन ऑफ बोर्ड. She's the Hydro Archon? और वो अपने हाइड्रोआर को How did you know we were looking for her? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. भाई क्या ही बोलती है. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and her अलग-अलग आंखें companion देखिए. who have journeyed here from आंखें distant अलग-अलग. lands. Is she talking about us? तो इसे कैसे पता चलेगा भाई. ये प्रैंक तो नहीं हो रहा है अपने साथ. I've long heard of the turmoil and chaos you've left in your wake as you visited other nations. भाई ये कुछ But तो I गड़बड़ है. welcome you nevertheless. No, खुद आइए वेलकम I करने. have come कुछ to तो गड़बड़ है receive दया. you personally. Fear is for insignificant ये लग रहा है भाई अपनी cowards. प्रॉब्लम सॉल्व करवाने आ I गए. am a god, and I बहुत will never ज़्यादा problem हो entertain the गई है. notion of such meaningless wariness. You can be rest assured, I see clearly your sincerity. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather. I, Focalor, hereby welcome you to the nation of Hydro. And Yeah,
on, still can't believe Buffer it. कर दी है ना? Feels like we've only been here for a few minutes. Buffer कर रही है क्या? Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little... English speaking call. हाँ भाई. Miss Hydro? Full English speaking How did call. you know we were captain? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the कर रही excellent. buffer. Okay. You फिर had ठीक है. best stop ये and मेरी consider. screen कर रही है तो कोई बात. Do you really have the noble qualities and मुझे लगा buffer etiquette कर रही है तो necessary to हो सकता है ना communicate with a क्योंकि यहाँ god? पे 3-4 tabs All हैं. it takes is a flick of my net का finger for problem. me to know everything about you. Whoa. अपना तो Talk सही about दिखना sounding चाहिए high and बस. mighty. देखो स्टोरी एंजॉय करो मस्त भाई. गेम मस्त है. देखोगे तो Oh? मजा आएगा. What's with these looks? These are Perhaps Hydro the welcoming Archon. ceremony still isn't चल enough? देवता. Is she waiting for us to start अब talking? इंग्लिश बोलने लग जाते जब ऐसे इंग्लिश Wow, इंग्लिश I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait. Does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, इससे what's ज़्यादा all the पॉपुलर commotion? होने वाले अपने. Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see her. Oh, I bet this is going to be the duel of the century. Ooh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy. And despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. Yes. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land. अभी Just PC as खेल you were रहे hoping हो to see. या मोबाइल? PC पे खेल रहा हूँ मैं now तो she bro. wants मैं to PC पे fight? खेलता हूँ. Aren't we getting a little ahead of मोबाइल पे भी है ये. पर स्पेस चाहिए रहेगा तो मैं स्पेस का कमी हो जाएगा लग रहा है. स्पेस चाहिए रहेगा 265, 256 या 264. इसलिए कहीं होता है ना वो वाला लगाना पड़ेगा. Are you not afraid? 30-40 GB Might का I हो जाएगा remind you फोन that पे. this is a duel against the divine. 67 GB What का are you ये trying PC to do, बस. traveler? Provoking a god in इसने front of her अभी people? 7-9 GB भाई अभी Stand अभी down, अपडेट आया. Florend. I 10 GB का admire her अपडेट आया है तो bravery. भाई अपडेट किया Few पूरा इंस्टॉल have the करना पड़ा. courage to draw their sword against फिर the एपेक्स god. भी खेलो She पीसी is बहुत मस्त. obviously a true warrior. हाँ एपेक्स पता है मुझे. Unfortunately, पर मुझे people पसंद नहीं. nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel मजा will नहीं not आता है slake मुझे their Apex में. thirst for excitement. Huh. Yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Aranias, criminals are Minecraft खेलेंगे always किसी दिन. requesting duels to defend their सर्वर है honor. माइनक्राफ्ट Getting बिल्ड a bit old, करना to tell बाकी the है truth. उसमें. सब कुछ है इसमें एनिमी Then, खेलेंगे as माइनक्राफ्ट the खेलेंगे. god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court. गॉड. ओ भाई Oh, all right. Now that'll be worth seeing. ये भाई कोर्ट में Right. भाई This is लग रहा है Fontaine, केसेस after चल रहे हैं all. भाई ट्रैवलर Such पे. a grand opera house. It would be a pity not to use it. ने ट्रैवलर पे What? केसेस Here's so चालू much कर about the दिए. crowd's reactions. Seems you've spent a little too much time in the opera house. कौन है जो हम पे केस किया गद्दारी कर Glad भी. to have a- Oh, we have reason to put you on trial. According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law, no? ओ भाई. Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Okay. Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? Precisely. Now,
भाई If you two have no objections, then in the name of the Hydro केस भाई Archon, पाइनोन I order पाइमोन की your वजह से केस arrest. हो गया भाई My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. But if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Winnie! अब एपेक्स कैसे Finally, करते someone who's हैं not सब crazy. एपेक्स How डीसी could से anyone call Paimon a Sir, flying आप- object? डीसी एपेक्स खेलोगे तो Great views और सब magician ज़्यादा होंगे। Linny. एक My As a magician who What just the rained heck? on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the पर यार show. एपेक्स में So, फारलाइट with खेल such लूंगा an इससे audience बढ़िया gathered अभी। here, allow me Apex to perform नहीं a बन सकता trick है। for everyone. अकाउंट का प्रॉब्लम नहीं ओ भाई ये क्या हुआ पकड़ लिया भाई ta-da! What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? प्रैंक हो रहा है भाई इनके साथ ओके अरे भाई इनकी साजिश है There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, You called मुझे पता that. नहीं है पता वैलो खेल सकता है ना I वैलो thought it was pretty good. डाउनलोड है Nice one. GTA भी Huh. डाउनलोड है I'm not sure what to think. पर नहीं It seems Lady Farina's charges no longer. खेलेंगे ना अपना फारलाइट खेलेंगे अपना मजे से Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Performance? You see all this as a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent भाई person. दो लोग आए हैं नए नए और उनके When मजे there लेंगे are valid grounds, आते ही I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! ओ भाई ये होताओ भाई होताओ की तरह कर रही है देखा पूरी होताओ जैसे टुलुलु क्या ही कर ऐसे तो नहीं हो रहा है ठीक है पर थोड़ा म्यूजिक बंद करता हूँ अभी Just like that! She's gone! Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. He never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. ये कंफ्यूज ही हो रहे थे Anyway, I अभी had गेम no प्ले idea चालू you were a होगा magician, Linny. It sounded like you'll be गेम performing लो at तो the दिखाओ Opera House, जल्दी right? हाँ गेम प्ले है I just अभी know थोड़ा a बातें few चल simple रहा है tricks I कहानी used to चल make रहा a है living. ओपन वर्ल्ड है पूरे Lynette वर्ल्ड is में my कहीं भी assistant. घूमो पता है It Fight will होगा, actually be सब my होगा. first time Action, performing on the drama, most सब prestigious है. stage in Font. Isn't the... When there are no public trials being held and My brother's always Oh, sure. ठीक है ठीक है Splendid. थोड़ी थोड़ी आगे कर लेते हैं This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help. ठीक है okay What are they going to use it for? About that, I'm not sure exactly. It says that every person in Fontaine is born थोड़ा with कट sin. सीन्स आएंगे स्टोरी No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned.
In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine should... We hope that at least the people... As a magical... Oh, Paimon gets it! It's like... Now, it... चलो भाई अभी तो कुछ काम कर लेते हैं। तो ये है, इससे बात कर लेते हैं थोड़ा। फिर अपन घूमी-घूमी करेंगे। So you're the blonde traveler. Oh, thanks. सारे वो खोल के आने ना। ये भी देना है क्या? What's this? What? No, Hey, bhai, no. The जादू story की said बोर्ड लिए it's रख ले। time. So, बिल्कुल टाइम नहीं है बात करने का, बहुत काम पड़ा है। रख ले, ले। all ये जबरदस्ती दे देंगे हम। और कहाँ पे? Squall and Fury. भाई जल्दी ले। Huh? ये थैला उठा और रख ले। Life is all... कैप्टन, Oh, all रख लो right, इसे। fine. हाँ, रख Thanks. लो भाई। It's just that... हमें देना है, तो हम देते ही रहेंगे। चलो अभी मैजिक तो देखने You को already मिलेगा handed है। out all of the magic pockets? Yes, yes. That was fast. Yes, but... Is there anything else? Yes, what... So, you wanna... Oh, that would... ऊपर जाना है। ऊपर कैसे जाए? सीढ़ियों से जाना पड़ेगा भाई। Quit नहीं, following me. ऊपर जाना है हमें। Too slow. देखो, अब ये है पूरा मैप। जब तक हम ये अनलॉक नहीं करेंगे ना, ये सब अनलॉक, पूरा मैप अनलॉक नहीं होगा। और इतना छोटा सा मैप आया है अभी तो। देख लो, इतना सा मैप आया है, इससे भी छोटा मैप है। जब आएगा तो फिर इतना बड़ा मैप आएगा। नहीं, बड़ा एक्सप्लोर करके रखा है हमने। कहाँ पे कम रह गया था? यहाँ पे मिला ही नहीं मुझे। नहीं तो ये 100% हो जाता है एक्सप्लोर। ये स्टोरी थोड़ा करना पड़ेगा ताकि हमारे पास... It seems we have to use Hydro to collect for maritime flowers. तो अच्छा रहता है। तुरंत हाइड्रो ले 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 भाई, जितने भी थे ले ले। ये ऐसा गिफ्ट ले लेगा। यहाँ घूम सकते हैं, अभी समुद्र है, पहाड़ है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। और ये समन्स करते हैं हम यहाँ पे, सारा कंप्लीट करके, क्वेस्ट वेस्ट सब कंप्लीट करके यहाँ पे हमें समन करने को मिले। देखिए पीटी है यहाँ। एक में तो नहीं मिलने वाला कुछ। अब
से बात कर लेते लेनी से क्या है You made quick work of that. I can tell you're an experienced trap. Maybe next time. No. Fine. So, we're going to the court. ऊपर जाना है भाई, हमें ऊपर जाना है, जल्दी में ऊपर भी अंदर टपकना नहीं है, ऊपर ऊपर लिफ्ट के Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? What's wrong तो with him? समस्या पहले आ जाती है didn't भाई, notice इनकी anything. समस्या सुलझाओ। She's obviously a thief. Okay. Magicians and thieves practice Sure. similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. Okay. चोर पॉकेट मार 150 रुपया चुरा लिया उसका भाई। Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to. All right. ठीक है, ऊपर तो जाना है। कहाँ पे कैसे जाऊँ? मैकेनिज्म तो है। ओके। कहाँ से जा सकते हैं? ये रहा रास्ता। ओके। फालतू का मैं बाहर रास्ता ढूंढ रहा था। ओके, लिफ्ट है तो सही। है तो सही लिफ्ट। ये रही लिफ्ट। ठीक है। Behold! ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही, तो ऊपर ही जाना है। दिखेगा कैसे भाई, कितना पहुंचे? चलो मैप अनलॉक करते हैं। इतना मैप अनलॉक हुआ है, पता है यहाँ से हमें जाना है, तो मैप अनलॉक करना है। ओके, आवाज कम करके रख। और हमें जाना है अभी, ठीक है, हो गई बात। एक मिल गया था, एक से कर रहे थे, एक से कर सकते क्या पूरे? एक से तो होना चाहिए ना, एक से कुछ नहीं होगा भाई, एक से कुछ नहीं होगा। चलो हम अभी यहाँ की खूबसूरती नहीं आते। अरे यार ये फिर बातों में लग गए। देखो तो देखना था मुझे। आई चोर आई, चोर आई, पहले चोर को देख। अरे उंगली मत कर भी भाई, मोन उंगली कर दी भाई, इससे पता लग गया। You're right. She might. Nothing's happened for a while now. Paimon wonders if Lenny caught the thief. Yeah. चलो अभी तो मैं नहीं जा रहा हूँ सर, नहीं बुक देखी। चलो ओके ओके, ये पीछे से जगह है और ये पूरे में पानी लगा हुआ है। तो ये क्या चीज है? ओके यहाँ पे इसको रखा। ओ बोट, बोट मास्टर, ये कौन सा जानवर है भाई? देख लो अभी हम यहाँ पे हैं और हम वहाँ जाएंगे, एकदम वहाँ पे भी जाएंगे। बहुत दूर दूर जगह है, कुछ पहाड़ दिख रहा है उस पे भी जाएंगे। और हम वहाँ तक जाके आए हैं, पता है? वो देखो वो ये है लोहे का, और यहाँ से और क्या दिखे? इधर तो कुछ नहीं। और ये सुमेरु के पहाड़ है, जगह जगह सुंदर सुंदर जगह। ठीक है, ये बोट है, इस पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ पड़ा है। Too slow. एक डॉग भी है।
दिखा दे गुल हो रहा है डॉग्स में तो कैसे दिखता एक और हाय ये तो अच्छी लग रही है काफी अच्छा ड्रेस है प्रो ग्लेव एडवेंचर है बाद में बात होगी चलो अपना काम निपटाते हैं ये रे पकड़ लिया Are you sure that's all she took? You should check to make sure you're not missing anything else. No, that was all. Oh, I can't thank you enough. I did... Anyway, I should be going now. Thanks again. Oh, were you returning what the thief had stolen? That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the time I looked back, she was already gone. I saw the general direction she went, but Lenny twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. Oh, did you get hurt, Lenny? Okay. I'll be alright. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. If you want to play at being a hero, at least try not to get hurt doing it. You're right. Sorry, Lynette. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete failure. What a slippery little thief! Guess things turned out all... Alright, let's put this little detour behind us. ओके ये स्टैचू तो देखा ही नहीं ये है हाइड्रो आर्कोन The wind rises. देख रहे हो पर इसमें तो कुछ और ही लग रही है ये इतने बड़े बाल हैं क्या उसके शायद हाँ है तो पर ये कुछ अलग नहीं लग रही ठीक है हाँ छोटे से बाल एक आंख करती ठीक है वही है तो वही अभी तो अपनी जर्नी शुरू हुई अपने को जाना है वहाँ पे एकदम अरे भाई रुक जा भाई देखो कितना खुश हो रही ये छोटी सी इमरजेंसी फूड खुश हो रही What an ingenious way to get around! People in Fontaine really know how to use water. ये लड़कियाँ This is an aquabus. It allows people to travel between several key locations around Fontaine. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? Lol. No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Whatever. Guess that's what it's like to be an older brother. It's about time for us to leave. Let's get on board. Okay, let's go. ओ ये कौन है अच्छा वो है ओके इसका नाम क्या था स्कारलेट है तो ये बैठ गई Huh? फाइनली What? स्कारलॉर्ड यस Paimon! कुछ तो गेम प्ले दिखा अभी भाई देख अभी तो स्टोरी चल रही है गेम प्ले का टाइम तो अभी आएगा गेम प्ले आएगा तुमको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा जब हमें अगर तुम देखोगे ना इस गेम खेलोगे तो तुम्हें लगेगा कि स्टोरी चाहिए गेम प्ले तो तुम डेली ही करते हो अभी स्टोरी का ही मजा है We still have no idea how the Hydro Archon knew about us.
Oh, let गेम प्ले तो हम Paimon रोज ही introduce you to करते our हैं new friends. डेली के कमीशंस No करने need for पड़ते हैं हमें introductions, तो Paimon. गेम I प्ले would डेली का recognize होता the है great magician Linny and पर his स्टोरी assistant भाई Lynette कभी कभार ही anywhere. I wouldn't be much of a महीने में reporter एक if I बार didn't आती know है who तो they उसे were. एंजॉय नहीं It's किया a तो क्या pleasure ही to meet किया you. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you. Now that everyone knows each other, Fontaine suddenly doesn't feel like such an unfamiliar place. ओ बढ़िया So, what have you been up to lately, Charlotte? Any big news? Not too much. When there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You could still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. For example, reporting on how a scammer once अरे ये deceived कैरेक्टर vulnerable भी आने girls वाली into थी पर अभी relationships, आए नहीं or how a financial criminal was once so poor ये that they चाहिए ate a यार single piece of bread for 5 days. Ah, you're right. Seems you know me pretty मेरे well. दो अकाउंट्स हैं What तो I'm मैंने really एक after फीमेल is कैरेक्टर ले आई exclusive, sensational ब्रेक news में भी pieces that could कैरेक्टर shake the country. और These फीमेल smaller कैरेक्टर stories की are a ग्राइंडिंग waste of my बहुत talents. पूरी परफेक्टली है Oh, I अच्छी just है remembered. I've been कैरेक्टर्स भी following a ज्यादा हैं case तो ये lately. अलग से ही करता Well, हूँ a series of cases actually. पूरी लाइफ स्ट्रीम You mean the serial disappearances of young women case? That's right. These That's stories right, are the these talk of the stories are town the right now, talk. and it's probably the most mysterious case we've ever seen. तो ये एक I'm the first रिपोर्टर with a है draft और ready to ये publish when न्यूज़ the case ढूंढती is है finally cracked. And it's केसेस the headline ढूंढती है story कहाँ in the चलता है Steambird. Oh, when देख that रहे हो happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial अरे disappearances भाई of young सीनियर women case? सीनरी भी तो You दिखाओ mean the हमें culprit hasn't been found? ये तो हमें ऐसे ही ले जा रहे हैं बातें कर That's करके right. The first missing girl case happened Farlight almost में 20 मजा आ years रहा ago. है And ever since, after a Okay, period of okay. time, Bye, another everybody. girl See disappears. you बाद में What the cases have in common is that the girls are all of a Okay, similar night age, mode ही है and that they've all vanished without a trace. पूरी But the रोवी फुल scariest है part is that to this day, none of the अच्छा, girls have ever been. खिलाने आए Many क्या? suspects have been arrested over the years in connection with this case, but देखो shortly after मुझे each ये तो arrest, करना ही है another ठीक है disappearance would always happen. I have to do that bro Yes, Farlight तो हम possible. खेलेंगे ही शाम को But either way, I believe that every पर case खेल has खेल some के कितना ही precise truth खेलें behind it, इतना waiting ही to be रैंक कुछ करें exposed. लेजेंड करेंगे Yes, I लेजेंड भी agree. करेंगे And at the very least, the family of देखो, those missing ये girls stories है deserve ना, some sort of कभी explanation. कभार ही आती है तो मैं स्टोरी I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get... Please don't imagine that, Lenny. हाँ छुट्टी है क्या आज किसी चीज की अरे हाँ छुट्टी है शायद किसी चीज की यू कंटिन्यू टॉकिंग ओके ओके पर मुझे सीनरी दिखाओ यार प्लीज सीनरी दिखाओ मेरे इसलिए तो आया हूँ मैं स्टोरी एंजॉय कर मजे से देखने नए कैरेक्टर्स हैं नए नेशंस में आए तो भाई मजा तो आने वाला है क्या हो जा भाई यस 16 8 Hey, we're almost there! आगे फाइनली ओ भाई वहाँ पे भी एक बोट जा रही है आगे यस ये गुलाटिया खाना कब चढ़ी ओ नए टाइप के बर्ड्स ओके ओके पानी में भी है वहाँ पे कुछ है रेड रेड फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं ओके ओके ठीक है Well, I really enjoyed chatting with you. Life should be full of pleasant little तो surprises like बोरिंग this. में तो अभी हम यही करने Us वाले as well. The ride went by too quickly. अपन फारलाइट I have an के interview to get अलावा to. और गेम्स I should खेलेंगे get going मॉर्निंग before I'm में late. फारलाइट इवनिंग में खेलेंगे
4 बजे 3 घंटे के Hopes we can chat again soon, Charlotte. See तो ya. अपना तो यही Bye चलने वाला now. है। Oh, be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. या ओके ये तो गई। What a अब tough इसके साथ छोड़ job. दे भाई, ये कितना ही Always running बोलेंगे। around and interviewing everyone. Well, where should we go now? If you Yes. don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collected. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start anyway. ओके मैकेनिज्म है कोई, और ये हमसे ही सॉल्व करवाएंगे भाई, इनकी कुछ बस की बात नहीं होगी। यहाँ घर है भाई, ये तो अच्छी जगह लग रही है। मुझे लगा कि ऐसे महल सा है बड़ा सा, पर यहाँ छोटे छोटे घर भी हैं। तो शांति है, मजा आ रहा है। अब आ गए हम। ओ भाई साहब, तो ये शॉप्स है, रेस्टोरेंट है। भाई छोटी मास्टर तो अच्छा लग रहा है। छोटी है क्या? नहीं, हाँ छोटी है। भाई थोड़ा आराम कर ले क्या? ओ भाई इसकी ड्रेस से मैच कर रहा है ये सब। और एक कप है, उसमें चम्मच है। Every scent tells a story. अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। बात करते हैं, स्टफ से देते हैं लोग। क्या कुछ तो दे भाई। वो क्या हमें परफ्यूम मिलेगा? परफ्यूम परफ्यूम ओके, परफ्यूम की शॉप है देखो। कुछ नहीं दे रही है, चलो बाद में छूटेंगे इन सब लोगों को। अभी सुनते हैं क्या बजा रहा है। क्या भाई, ये तो समझ नहीं आया क्या है बजा रहा था। हेलो डियर, ठीक है ओके, अपना माल ले लिया हमने यार। ये है ओके, 4 फ्लावर ओके। ये लिफ्ट है, Following me. लिफ्ट है, लिफ्ट है। ओ भाई यहाँ तो जाएंगे 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 अब। पहले बाहर बाहर घूम लेते हैं। ये कौन सा घर है? ओके क्लॉक टावर वाला है, तो और ऊपर जाना है। ओ भाई हेलो, भाई मस्त है जगह सारा। तीन दिन माइनक्राफ्ट खेलेंगे और 3 दिन गेंशिन खेलेंगे इन मोड, और शाम को फारलाइट खेलेंगे। अगर शाम का कुछ इवेंट होता है किसी गेम का तो हम वो खेलेंगे फिर। हाँ भी है ना, ये काट दो सारी झाड़ियाँ। अरे मैं वापस आ गया बस। और मुझे वहाँ पे भी जाना है। कहाँ गई जगह? यही है ओके। ओ भाई लूट मार के फल वल चुराओ चुराओ, संदूक चुरा सकते हैं क्या? ओके पोंका ही जैसा लग रहा है। ओके एक वो तो कर लेते हैं अभी। हाँ जैसे कि मेरे को करना था। आर्कोन स्टैचू किधर है? स्टैचू किधर है यार? वो मार्क करते हैं मैप में।
fury. और ऊपर है, और ऊपर कहाँ से जाए? चलो हम जितना सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं चढ़ जाते हैं। और सीढ़ियाँ हैं, ये रास्ता बंद। और किधर से चढ़ा जा सकता है? Too slow. ओके, इधर से चढ़ जाते हैं। चलो आज हम जाएंगे भाई, कैसे भी जाएंगे पर चढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पहुँच गया और स्टैचू है इधर। ओ भाई, अंदर से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, गिर गया, अरे नहीं। Behold. ये पकड़ नहीं रहा है। अब मैं किधर से जाऊं? Squall and fury. ओ भाई, यहाँ एक चेस्ट रखा है, तो यहाँ पे एक चेस्ट मिलेगा। ये मैप में इस जगह पे, एकदम इस जगह पे। और कहाँ Wind rises. ऊपर जाने का रास्ता किधर गया भाई? चलो भाई स्टोरी करते हैं भाई, ऐसे तो ये डॉग्स है। ओके, मुझे लगा लोग हैं, ये मुझे लगा ये लोग है पर डॉग्स है ये। देख रहे हो, ये गधा लग रहा है यार, ये अच्छी लग रही है, जैसे कि बालों से ही पता लग रहा है फीमेल डॉग है। कैप्टन, अरे ये कौन लोग हैं? हेलो मिस। अरे अपना बॉस लाते हैं फिर तो। यहाँ एलन को थोड़ा कर देते हैं। बाय बाय। Sure. अब अपना जोंगली लाएगा और इसे बात करें। हेलो मिस। I heard down the grapevine that Chioria Boutique just got some new मेरे को तो flavors बोल ले in. तू पहले। हेलो, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका? वो वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, लॉन्ग हेयर वाली अच्छी लग रही है। नहीं, वो आ गया, डाकू आ गया। ए, क्या प्रॉब्लम है भाई? बात ही तो कर रहा था। क्या है भाई? आर कौन हूँ मैं? हाँ, जियो आर कौन, निकल। हाँ, वहाँ से राइट हो जाइयो। बात नहीं करने देते हैं भाई। अब ये क्या है? रूडियन नाम इसका, और एक ग्रेसी दिन वाली अच्छी लगी। हेलो, ये भी बातें करती। They have. In fact, I've already अच्छा put in ड्रेस, my order. इनका ध्यान ड्रेस पे है भाई। ओके, हमें क्या ड्रेस मिलेगी क्या? इधर जाना था, हमें इधर जाना था। Behold. जैसे कि हम बहुत कोशिश करते हुए भी और ऊपर नहीं जा पाए, तो हम सीधा नीचे ही चल लेते। अरे बच्ची, सर पे लगेगा। अभी घूमना लगता जाके उसके सर। कैसे लोग हैं ये, बच्चों को ऐसे ही खुला छोड़। अरे भाई, चश्मिश बच्चे। अरे टिम्मी, चश्मा कब लगा लिया भाई? ए टिम्मी, चश्मा कब लगाया? ये टिम्मी है भाई।
Take a guess. देखा सीखा आवाज है हेलो इस बंदे से बात अच्छा उससे बात This उसी से is बात our current abode. Ah, वहाँ पे एक चेस्ट Femine, रखी है मैंने you're वो देख home. ली Where did everyone else चेस्ट go? देख ली मैंने वहाँ I रखी have है some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. I see. Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. Okay. Hello. ये कौन है Meet you. Paimon is Paimon, and this is the अरे traveler. भाई Paimon is you sound Paimon Linny, could you come here for a moment? What is it, Fremine? Do you have something to tell me? अरे हमें भी बातें बताओ भाई क्या बात चल रही खुफिया बातें चल रही Okay, I see. Is everything all right? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Oh, before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremine? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. That's our Fremine, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. भाई मैं तो उधर ही देख रहा है ठीक है इनकी बातें नहीं देख रहा मैं पीछे देख रहा है लेनेट का देख रहा है अपन ओके मिल गई ये ऊपर क्या है बारिश आ गई Looks like rain. भीगी भीगी Oh, you're right. रातों में Wasn't it clear and sunny just a moment ago? I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe. It's said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry! Why Hydro Dragon is crying? If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Let Paimon try something. Hydro Dragon, don't cry! Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along. Sorry, it might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. Okay. It rained for longer than I suspected. Oh, it's already getting late. Was there something you needed to do, Linny? Every dragon exists. Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Araneus. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Or maybe in future we can see with Hydro. पर उसके पास एक वो बड़ा सा कौवा था. Are you leaving now? What is it, Fremine? I'm in a hurry. यामी को भी तो है. Oh, I get it.
You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Perhaps we could trouble the traveler to help us take these materials to the Beaumont workshop and deliver them to the owner there? I'm afraid that Fremine can be quite introverted, and the boss there tends to be pretty talkative. Fremine has always been a little afraid of her. No trouble at all. Don't worry, we're on the case. Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I'll think of a way to make it up to you. Oh, no need. This will be a walk in the park for us. थैला भर के दे दिया भाई इन्होंने। ये लो, उठाओ बोझा और चलो। सारी वर्ल्ड का मैप बोझ उठाने को दे। यहाँ खाना पीने चलते हैं। ये कौन? The tea here just keeps getting more bitter. यार हमें भी एक ऐसा प्यारा सा कैरेक्टर चाहिए जो लड़ाई करे। कुछ तो दिया हमें, क्या दिया? ओ भाई टैलेंट बुक दी है भाई, यहाँ की एक टैलेंट। खेल तो अच्छा चल रहा है भाई तेरा। क्या नाम है इसका? डूजा होटल नाम है इसका। डूजा और ये कैफे का पता नहीं क्या आगे का क्या लिखा है वो सब। ओके एक रेसिपी मिली। We will try it. और ये दारू का बोतल। फोंटा फैंटा तो सुना था भाई, फोंटा क्या होता है? ठीक है भाई ले लेते हैं। फ्रूट केले फ्रूट पता नहीं क्या है पर ठीक लग रहा है बस। अरे और ले ले, एक और ले ले। बहुत पैसा है, ले लो। और ये चाहिए, क्या है ये? कॉन्च। ओ भाई इन्होंने कॉन्च भी पका दी। वाह, ये चाइना से बिलोंग करते हैं ये लोग। आखिर हाउ कैन दे कुक कॉन्च? कॉफी बीन्स ले लो, टी का पैसा है, डालो भाई पैसा। एक इवेंट भी आया है, फोटो खींचना है हमें। ठीक है अभी आज ही आया है तो इसका कल वीडियो बना देंगे। इस इवेंट को कल कर देंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे। सारे अनलॉक है भाई, अनलॉक कर फोटो करना है, पूरा एरिया भी अनलॉक करना है ना। देखो कलेक्ट तो कर सकते हैं सारे एक ही साथ, तो इसका कल वीडियो You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. कल सुबह सुबह आ Someone can't handle it. जब तक तुम लोग अपना अरे नहीं Maybe that's their problem. ठीक है नए वेपन्स आए, त्रिशूल आया है, त्रिशूल घुसा देंगे अब। बहुत चीज में आ गए भी बहुत होंगे पर मेरे पास त्रिशूल ये आया है। ये है ग्रेट रेट का वेपन। ओके सारे ग्रेट रेट के। ओह भाई ये क्या है भाई, इसे दो को देंगे तो क्या ही मस्त लगेगा। अटैक विल बी इंक्रीज पर तो के लिए नहीं। ये यूला को दे सकते हैं। मैक्स एचपी इंक्रीज बाय 32 एचपी वाले कैरेक्टर को, मतलब ये होगा किसी कैरेक्टर पे। ये वो है डिवेशन आफ्टर ग्रेट रेट का। ओके जोंगली पे कितना मस्त लगेगा यार त्रिशूल। हाँ नहीं तो ये स्याओ पे तो बेस्ट लगेगा भाई। ये इसी चैने पे भी मस्त लगेगा। कोई बात नहीं अपने पास तो
एयरटेल पास ही नहीं है तो चलो ये आर्कॉन क्वेस्ट करेंगे तो 1 20 मिलेगा और 3 ये बाकी के 3 इनकम्प्लीट स्क्वायर है। हैंग आउट बाद में करेंगे काया का। हमें जाना था यहाँ। ओके नीचे गिरूं पता नहीं। ओ भाई Quit following me. फैक्ट्री है ये तो भाई। ये भाई गड़बड़ जाएगी। तुझे जाना है ऊपर अभी वहाँ नहीं जाना भाई। इधर हो इधर उधर मत नहीं निकलना हमें गटर वटर में। देखो गटर के दरवाजे हाँ तो फर्स्ट भाई Hello? Is there any... क्या कहते हैं इसे? Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. Ah, these must be for Magic Pockets. I could tell right away. No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. It seems both their hearts and their pockets are made of gold. Wow. So, is Linny actually loaded? I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician and Hey! Is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology. And wasting is a kind of crime. But where does a big machine like that get its power from? Well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnity. It's a type of energy that's produced from trials. Well, I'm not completely sure of all the details myself. But basically, when a trial is in session, the oratrice mécanique d'analyse cardinale harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. So that's what its other function is? Paimon heard that the oratrice was created by the Archon to make judgments, but Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? Oh, yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for... Even though I've never, besides indemnitium, it isn't produced... I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind ये तो एनिमी को देखना था। एनिमी कौन है यहाँ? You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Confrérie of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no, 70%. Huh? You... Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now's a good time to leave? Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? If Confrérie of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? You're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? We're surprised to see you too! What are you doing here in Fontaine? You didn't want... But it seems that either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Yes, okay. Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while?
You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Listen to me, boy. If you want your Mora, fine. Why don't you come and take it? Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said, "Hey, that's way over the line. All right, boys, let's see who has to pay up now." Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? I'm sure this won't take long. Yes, अभी खेलते हैं. Finally gameplay का time आ गया. बस ज़्यादा देर तक टिके ये लोग जल्दी ना मारे. Who's next? Riptide. बस इतना ही जोड़ता. खत्म. इतना ही दम था इनमें. मोटे-मोटे What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait, don't tell me you're... Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? Huh? Okay. Now's my chance. अरे भाई. Huh. That was weird. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on... What are you doing in Fontaine, child? I don't see its work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Maybe you losing control of your vision just... That is a possibility. I can't remember if I ever... It was during that... She was always quiet. One time, I asked her why she was willing... Because I had a... What is it? She never explained in my dream. Oh, where? It takes that So you used the whale as inspiration for one... So why don't you just... You make it sound so... But it's been years. Oh. Yeah, I'm out of... Oh. Next one is... No. Yep. In Fontaine, before a criminal goes to court, they're given... The champion duelists are all so engaging, and the worst case scenario... Though it's rumored that Fontaine has a death penalty. So really... So, do many people... Apparently, it's exceedingly rare for anyone... Besides, none of the champion duelists are to be trifled with. Which is apparently the one I'm meeting today, Clorend, is... Well, that's child for ya. Oh, before I forget, I want... Huh? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel. So, I think I'll be better off without it for now. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Someone knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. That sneaky guy. He said he... What?
अभी तो जाने दो भाई मेरे को, स्टोरी छोड़ के। Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was बुक्स the में तो murderer इंटरेस्ट है all भाई, मेरे को along! देखनी है। भले ही मैंने सारी बुक्स नहीं पढ़ी हो, पर है। Paimon was just surprised, कलेक्ट that's करने all. का इंटरेस्ट है भाई। Paimon never saw that twist coming. The whodunits here in Fontaine are... It's so exciting to reach the moment. Oh, चल यहाँ पे एक बुक है, मैंने house is on there in Yes. ये So let's go ride the aquabus. बुक के स्टार्ट में पिछले एक बुक चोरी कर। अरे यार न्यूज़पेपर है, ओके कल न्यूज़पेपर है, हाँ न्यूज़ स्टैंड ऑनर, ओके तो वो न्यूज़ स्टैंड है बस, पर न्यूज़ वाला वो नहीं है। न्यूज़ कहाँ पे छापी जाती है? एक तो अच्छा है, हो रहा वहाँ पे है स्टैचू, ओके अब वहाँ जाया कैसे जाए? वहाँ से रास्ता है क्या? वहाँ से शायद ही रास्ता के हिसाब से। नाली है क्या ये? नाली में तो नहीं गिर गया? ओ भाई ये एकदम मस्त वाला फील आ रहा है, जैसे क्या नाम था उसका, असेंशन क्रीड का। यस आ रहा हूँ मैं, ऐसे ही कहाँ जा रहा है और नीचे आ गया लॉर्ड और ऊपर जा रहा है। अब रास्ता किधर से? ओ भाई अभी टकरा जाता भाई, लोहे का बंदा है वो। Quit following me. Too slow. यहाँ से रास्ता है, ओके अभी आया ना यहाँ, ओके यहाँ पे ये है। कुछ ले लेते हैं, खरीदने का है क्या? पैसा है अपने पास, कितने का बेचेंगे? नहीं बेच दिए कुछ अभी। बत्ती क्या ढूंढ, किसी को बात नहीं करना है डेली कम। ओ है क्या Add Ash. ओके अपना तो ये 60 लेवल का भी हो चुका था फाइनली। हमारा 60 लेवल का बाद में कलेक्ट करेंगे, जिस दिन विश करेंगे ना उस दिन कलेक्ट करेंगे 60 लेवल। कहीं पे तो चमका कुछ, होगा कहाँ? बाद में ही ढूंढने को मिलेगा। यहाँ आसपास क्लू है भाई, ये इतने बड़े बड़े। ओके यहाँ तो आया था मैं। Quit following me. ऊपर कैसे जाया जाए? यहीं से रास्ता है भाई, रास्ता यहीं से है। वो मैं पूरा शहर घूम के आ गया और रास्ता यहीं से। क्या मैकेनिक, इसी से शायद पावर बन। Too slow. जब पावर का नमूना है कि यहाँ पे पावर आ रही है। तो आराम कर लेते। चलो ओके चलो 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 जल्दी ऊपर। ये दीजिए, अरे फ्लोर्स भी हैं। ऊपर जाना है, खाने कौन से फ्लोर पे जाएंगे अब ये सेलेक्ट करके नहीं। ओके वो रहा स्टैचू। अरे भाई मुझे लगा बंदा आ रहा है, ये पुलिस वाले पर लग रहे हैं लोग। हट तेरी, डर ही नहीं रहा है। ऐसे चल रहा है एकदम मस्त, मजे में चल रहा है। ओके यहाँ पे एक क्वेस्ट है। ओके अभी हुआ ना। ओ भाई इतने सारे टेलीपोर्ट।
ओके आर्कोन के पास एक बनता है जिसका हेलो लेडीज। अच्छी नहीं। ओके किसी की का भी बुराई नहीं करनी, ठीक है। कपड़े देख के नहीं करनी। पूरा शहर दिख रहा है मुझे और ऊपर जाना है मुझे। वहाँ क्या जगह जाने की। ओके अंदर भी जा सकते। अभी वो पूरा कोर्ट वोट दिखाई देगा शायद। गैर कानूनी तो नहीं कर दिया हमने कुछ? गैर कानूनी काम तो नहीं कर दिया अंदर जाके? नहीं यार फंस जाएंगे। तक तो नहीं रहे। तेरा कोर्ट भाई जो मैं कैसे दिखाया था। हमें न्याय चाहिए। किस चीज का चाहिए पता नहीं। यहाँ पे भी जानवर को लगाया। यहाँ से रास्ता नहीं जाने का। चलते हैं भारी निकल लेते हैं यहाँ से। इधर उधर जाने की हम जगह ढूंढते रहते हैं। ये आर्कोन क्वेस्ट पूरा हो जाए तब हम देखते हैं दूसरी। बहुत टाइम लगने वाला है मेरे को तो। इतना ऊपर जाना और ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, यही है। Squall and Fury. पहुंच गया। यस फाइनली। अब यहाँ से हेलो रोनी लंबा है बहुत आर्कन पे। देखते हैं देखते हैं कितनी देर में कर ले बेटा। ये तो कुछ ज्यादा ही ऊंचा है भाई। तो आ गए हैं वहाँ आसमान की ऊंचाई हो। तो भाई अटक गया। अभी वाली बिल्डिंग नहीं। अरे जगह ही नहीं है ऊपर जाने का, जगह ही नहीं। अब और ऊपर कैसे जाया जाए? और वहाँ पे एक चीज है, मुझे वो चाहिए। वहाँ पे एक हाइड्रो क्लू। हाँ वहाँ जगह है। हाँ मुझे थोड़ा सा जगह, बस ये खड़ा हो जाए इस जगह पे। क्या होगा ये खड़ा इसे? थोड़ा सांस लेते, खाना खाते, खाना खा लेते। पर नहीं है, नहीं हाँ देखा मैंने अभी देखा। खाना खाते हैं, क्या खाए? टाइम भी अभी कम। There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. पर कुछ तो देखा मैंने। ये जाना है। ओ
देख रहे हो वो कुछ जगह कुछ अलग ही है। उस पहाड़ में तो छेद भी है। हम वहां से आए थे, वहां तो गए ही नहीं। टावर पे नहीं कराई। आवाज आया ना? ओके जगह किधर? वो ये रहा, दे रहा जगह। मेल ले गया। देखो है, ये देखो यहाँ एक चेस्ट है सबसे ऊपर टॉप पे। Unnecessary. आया मैं 2 सेकंड में। Relax. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Relax. ओके मैं आ गया और वहां पे अभी अपना हाइड्रो क्रू भी है रोनी भाई। अरे यार बस ये चढ़ जाए। देखो क्या ही मस्त दिख रहा है। The wind rises. अरे वो रहा। हेलो ये क्या है ये बताओ मुझे। हेलो वो क्या अभी? There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever.
Relax. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. क्या क्या है? नज़ारे देखते पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वहाँ पे घर भी दिख रही है, वहाँ जा सकते हैं और जाना भी पड़ेगा वहाँ। और यहाँ पे ये मिशन का है, यहाँ ये वाले बॉस हैं। ओके, यहाँ पे अपना यहाँ पे ओपेरा हाउस है। ओके, कोर्ट ऑफ फाउंटेन है ये, यहाँ पे अभी हम हैं। तो ये जगह को भी अनलॉक करना है, एक जगह बाकी है। There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to यहाँ force a पे अपना एक conversation हाइड्रोक्लू मिल just to गया occupy silence. हाई कोर्ट के फाउंटेन कोर्ट के ऊपर, ठीक है। और जैसे कि मैंने चढ़ने का ऑप्शन तो बता दिया था, नीचे से आते जाओ। जगह क्या और बहुत सारी चेस्ट भी पड़ी होगी तो हम यहाँ से देख लेते हैं और अपना ये हाइड्रोक्लू ले लेते हैं। आजा आजा, ले लिया मैंने हाइड्रोक्लू। और चेस्ट वेस्ट है क्या? ये वहाँ पे देखो कुछ है, वहाँ पे कुछ है। तो ये रास्ता टूटा हुआ है, आधी नगरी डूब चुकी है तब। जैसे कि बात हो रही थी, डूबी हुई नगरी है एकदम डूब। और भाई सारे इस टेलीपोर्ट जोन करने पड़ेंगे, इतना बड़ा है। चलते हैं अपन क्या आ जाए। नीचे तक है और ये पानी की गहराइयों तक है। नीचे मैंने एक जगह भी सुरंग भी देखी थी। तो हाइड्रोक्लू तो ले लिया हमने ऊपर से, अभी चलते हैं नीचे। ओके, Squall and Fury. अरे ऊपर था, अब रास्ता किधर से? ये बोट भी है, चलाने वाला है, इधर से जाना पड़ेगा। ओके, 22 रास्ता दिखा रहा है हमें, इधर Following me. जाएं कैसे? और आगे लिफ्ट तो उसका दरवाजा तो खुला नहीं। Behold. अच्छा ऊपर चले जाते हैं, कोई बात नहीं, अपने पास ये है ना जाने के लिए। ऊपर था हाइड्रोक्लू। ओके, पकड़ ले। यहाँ से चढ़ जा। Upon the gale.
चलो आ गया ऊपर, नहीं आ रहा रास्ता किधर से तो पता नहीं। अच्छा लिफ्ट का गेट तो ओपन करना होगा। ओके मैं बीच लिफ्ट में उतर गया था और ये लिफ्ट पता नहीं मैंने ऊपर जाके छोड़ दिया लगा। बाइक गाड़ी आ गई। लेट्स गो। ओके बैठने की जगह क्या? ओके कहाँ बैठे? Welcome to the Navia line. I am Elfan. The boat will be departing imminently. Please do not stick your head, hands, or other body parts outside the boat. The Aquabus operator is not responsible for any accidents or injuries resulting from doing so. Also, please remember to buy the steambird, though I don't need it myself. ऊपर है शायद, छत के ऊपर है तो the destination of the current tour is Erinias. Points of interest worth visiting include the Fountain of Lucine and the Opera Epiclese. If you look to the left in the direction we are currently traveling, you'll see the famous Fontaine Research Institute up in the sky. An experiment gone wrong turned new sightseeing opportunity. Human ingenuity truly is a wondrous thing. बीच में भी वो भी है, टेलीपोर्ट है नीचे पानी के अंदर है। मछलियाँ पकड़ने का काटने की वहाँ चेस्ट दिख रही है ऊपर से। We are now approaching our final destination. Please be sure to bring all your personal belongings with you as you disembark. Even though I will take any forgotten items to lost and found, the paperwork is rather annoying as Melusine hands are not suitable for grasping pens. Please be careful when disembarking. It has been my honor to be your tour guide this trip. Thank you. परफेक्ट परफेक्ट ठीक है। यहाँ पे आते हैं हमें टेलीपोर्ट सिस्टम मिला और ये पहाड़ी इलाका एकदम पहाड़ी इलाका और यहाँ दिखा हमें हाइड्रो जैसे कि हमें इसमें घुसना है, एंटर करना और सीधा हम लॉन्च हो जाएंगे। ये तो इजी था। ये कहाँ लॉन्च हो गया? ये क्या है? अरीना है क्या? बैटल अरीना लग रहा है। वहां से हम आ गए हैं यहाँ पे और हमें 2-4 चेस्ट भी दिख रही है। वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं। वर्ल्ड एक्सप्लोर करने में तो कोई दिक्कत। The wind rises. फ्लावर बटोरते चलो बाहर। कुछ करने की जरूरत नहीं। Quit following me. Quit following me. कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। क्या करेंगे? Squall fury. Too slow. अंदर है, ओके। इसके अंदर भी एक है। ढेर है, वो पंखों वाले से। वो बच गया। पर अभी खाना खाने का टाइम हो गया। और अब ये वाला सिस्टम देख लेते हैं, इसमें करना क्या है। एक करना है, पकड़ ले, इसको देना है।
से देख Too slow. अरे भाई देखो मार हाइड्रो वाले से मार के देख हाँ आजा मार ले मैं नहीं थी हाँ कहाँ अभी इसको ट्राई करते हैं हाइड्रो वाले से ये आ चुका है ये नहीं It's time to pull the trigger. थोड़ा सा लैग कर दो बाकी इसकी एंट्री और एग्जिट मस्त है ये हुआ तो इसे हाइड्रो एलिमेंट से करना है और ये चालू है कितनी बाकी था अच्छा ठीक है यहाँ पे ये होगा वैसे तलवार से मार के फोड़ दे एक साथ चालू कर सारे एक साथ Even better than I imagined. It's my ये बादल बनाना है हीरा सारे एक साथ चालू Too slow. तो इस तरह से हाइड्रो एलिमेंट्स का यूज करके करो और जाना है Quit following me. My God. Too slow. ये वाली फोटो देखी थी हमने स्टार्टिंग में हमने ये वाली ट्रेलर में ये वाली फोटो देखी वो बड़ी वाली नहीं देखी थी उस वाली जगह की देखी फाइनली हम आ गए यहाँ पे ये सारे शो होते हैं Opera वाला जैसा है No wonder Linny and Lynette were looking forward to it. Huh. Looks like there's a lot of people standing around the fountain up ahead. Oh, Archon, please bless us with a bright and healthy child. We pray. I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy as long as our child is healthy and lives a peaceful life. I guess if they're our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. Maybe this is one of the customs in Fontaine. There sure are a lot of couples here. चलो अभी से बात करें क्या नाम है What's wrong? क्या हो रहा है Vache. No, Paimon didn't say anything. Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. Lynette! You scared Paimon! Lenny asked me to wait here for you, remember? Right. What do you mean? There are a lot of... Hey, you're not trying to scare Paimon. I see. In fact, you might not be imagining things at all. I suspect that what you heard is a result of your hypersensitivity to the hydro element. Others in my family have had similar experience. It's because of her sensitivity to the hydro element? But what would hearing a voice have to do with element? When do you cry? Wait, what? Just answer me. When Paimon's really sad? Oh, Then you should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine. So maybe what you heard was the intense emotion. So, what did the voice say? Rather than worrying about... Don't let that calm... Oh, right. चलो ये बाद में स्टार्ट करेंगे ठीक है Behold! यहीं
यहीं से स्टार्ट करेंगे वापस। क्या मिला? क्या मिला? चलिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में। तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं, कल करेंगे आराम से, टाइम नहीं लगाएंगे, आराम आराम से करेंगे क्योंकि अभी इसका स्ट्रीम करते रहेंगे। और 10 लाइक करावा देना जल्दी से। बाय बाय। कल करते हैं इसके आगे की स्टोरी। जो ऊपर है वो बता देंगे कैसे देंगे।